professor at Asst College, feeling honored to be the moderator for this insightful conversation. Today, we have a panel of experts who will share their insights and perspective on this crucial subject, that is constitutional morality, संवैधानिक नैतिकता. Please join me in welcoming our esteemed panelists. Speaker 1, Dr. Sanjula Thanvi Ma'am, Head and Dean Faculty of Law of University of Rajasthan, as well as Dean Faculty of Law at Dr. Bhimrao Ambedkar University, Jaipur. Speaker 2, Dr. R.S. Solanki, Sir, Associate Professor, Faculty of Law at Modi University, Lakshmangarh. Speaker 3, Aarti Sharma Ma'am, Assistant Professor, Department of Law, 5-year Law College, University of Rajasthan. As we all know, today we are going to discuss about constitutional morality, संवैधानिक नैतिकता. Constitutional morality is the idea that the Constitution is a moral document that reflects the values and aspirations of a society. It involves adhering to the core principles of constitutional democracy, such as individual autonomy, liberty, equality, dignity, privacy, and non-discrimination. Now, without taking more time, let's commence this enlightening discussion. I would like to request all the panel members to come on the stage, please. Thank you to the all panel members. Now let's talk about the historical aspects of constitutional morality. संवैधानिक नैतिकता के ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं. इसके लिए मैं डॉक्टर संजुला थानवी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह संवैधानिक नैतिकता पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें. संवैधानिक नैतिकता के ऐतिहासिक पहलुओं पर. It was an immense pleasure sitting here and discussing on constitutional morality. Thanks to the principal, SSS Law College, Santosh ma'am, Anjali ma'am, Rekha ma'am, for inviting me and giving me such an opportunity to speak. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, what I think कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि what is the difference between morality, societal morality and constitutional morality. जब हम केवल morality की बात करते हैं तो this is the ideal thing कि what is right and what is wrong. एक हमें ideal जो हम अपने ग्रंथों से पढ़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. जब बात सोसाइटल मोरालिटी की बात करते हैं तो सोसाइटी एज पर दी कंसेप्ट्स ऑफ दी सोसाइटी के उनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है. सोसाइटल मोरालिटी जो है वो सोसाइटी के हिसाब से होता है और जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही सोसाइटल मोरालिटी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो रहती है. कुछ चीजें डेवलपमेंट के हिसाब से चेंजेस होती हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि आज
हमारे पास में मोबाइल है। आज से 15 साल पहले हमारे पास में नहीं था। तो उसके लिए जो हमारा एटीट्यूड है या उसके लिए जो वैल्यूज है वो चेंजेस हो रही है। इसी तरह से क्या सही है और क्या गलत है, अगर हम आज से 15 साल पहले कहते हैं कि भाई मीटिंग में मोबाइल उठाना गलत है, तो उस वक्त मोबाइल ही नहीं था, तो वो एक मोरालिटी हमारे काम की नहीं है। तो लेकिन आज के संदर्भ में हम कहें तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सोसाइटी में मोरालिटीज क्या है, क्या सही है क्या गलत है। एज पर हमारा डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे हमारी मोरालिटी भी चेंज होती है। बात करते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले ग्रोथ ने हमें इसको डिफाइन किया। उसने ये कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको खुल के क्रिटिसाइज करना, उसको उसकी किसी भी गलत बात को खुल के क्रिटिसाइज करना। जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसके लिए आप अपने विचार व्यक्त करना फ्रीडम की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिफाइंड नहीं है। इसको भी थ्रू जुडिशरी इसको इंटरप्रेट किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को की डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश किया है जुडिशरी ने। अगर हम इसकी बात करें, अम्बेडकर की बात करें जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना उनको थोड़ा सा, उन्होंने अपनी डिबेट में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जिक्र किया और उन्हें ऐसा लगा कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि सब कुछ लेजिस्लेशन पे छोड़ देंगे तो लेजिस्लेचर जो है वो आर्बिट्रेरी हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज किया। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जुडिशरी दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बात करती है। एक तो वो काउंटर पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंटर पॉइंट्स ऑफ सोसाइटल मोरालिटी के रूप में उसको यूज करती है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो कि हमने रिसेंट देखा है वो है सोल, स्पिरिट, एसेंस, एम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। और जिस तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक हमारा डॉक्ट्राइन बन गया है जो हमें ये बताता है कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं ये जो भी लॉज बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है अगर वो और उसका अमेंडमेंट किया गया है तो वो अमेंडमेंट गलत है। उसी तरह से डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एस्टैब्लिश किया है हमारे जुडिशरी ने, और ये देखा है, बल्कि ये कहें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से भी वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी सब कुछ देख सकती है कि कहीं पे भी उनको ऐसा लगता है कि एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, whether aim, objective, any of the values of the constitution is infringed, तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के एक्शन को वायलेट कर सकती है। तो ये एक वाइडर कंसेप्ट आ गया है, मैरिज, डिमैरिज सभी चीजें की होती है, तो उसका एनालिसिस हम आगे और पैनल डिस्कशन में करेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable words with us. Now, delve further into the depth of constitutional morality. Our panel members brings a wealth of experience. Now, let's try to understand the difference between constitution and constitutional morality. संविधान और संवैधानिक नैतिकता में अब अंतर को समझने का हम प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर आर.एस. सोलंकी सर से अनुरोध करती हूँ कि सर कृपया हमें बताएं कि संविधान और संवैधानिक नैतिकता एक दूसरे से कैसे अलग है। थैंक यू सर। Good morning, all of you. First of all, I would like to thank the organizers of Subodh Law College, Principal Dr. Gaurav sir, Santosh ma'am, and the staff
that they have invited me to have a panel discussion on the very burning topic, we can say, that is constitutional morality. In fact, whenever we talk about constitution, it is not at all possible that we don't mention the word morality. As we know that since the constitution itself, when we go through the constitution, we see that the main line in the constitution is we the people of India. And so when you talk about the morality, basically morality starts with the people. So that is a very important thing we must be knowing, that unless and until the people have the morality, it would be very difficult to talk about the morality of the constitution. And so you cannot segregate between the two, that is constitution means you cannot bifurcate between the two things, constitutional morality on one side and individual morality on another side. Keeping this thing in apart, uh, when you see the word constitutional morality, as ma'am has rightly said, that it is nowhere defined. But what we understand from the word constitutional morality is that there is adherence to the basic things in the life which constitution protects. And what are these basic things if we talk about? That is the right to life, dignity, protection of his life, fundamental values, and not only about the people, how the state, that is the government, they protect it, and what is the coordination between the two. So all these things, when we sum up, it talks about constitutional morality. Then again, as already discussed, that Dr. Bhimrao Ambedkar, when he was drafting the constitution, he also discussed a lot about constitutional morality and what was his thought regarding constitutional morality was that there should always be a protection of the life of the people. There should be equality among the society. There shall be no discrimination in the society. And to keep all these things intact, government should always play its important role. So there should always be a coordination between the people and the government. And whenever there is a conflict between the two, government should play its role for the protection of the rights of the people. And so that is why we see that in the constitution itself, there are enough provisions which talk about, or because of which we can say that there is morality. When you talk about the fundamental rights of the people, directive principles of the state policy, when you talk about the fundamental duties in the constitution, with so many other provisions, which definitely lead to the constitutional morality. That's what we can say. As far as the role of judiciary is concerned, there also we see that right from the beginning of independence, the first and the most important case, that is of Ishanavi Bhati, where we find a hint about the constitutional morality as to what level the government, the parliament can go to infringe the right of the people. So that is, we can say, the foundation as far as the judgment is concerned regarding constitutional morality. Then, from time to time, we have seen so many judicial pronouncements, like your Nautage Singh case, we can say, Naz Foundation case, we can say, where the judgments, all the judgments, they have, we can say that they have established again the constitutional morality in India. Then one more point which is worth to discuss here, and that is the societal
morality and the constitutional morality. Because one of the famous judgment that was of the Supreme Court case which came here, uh, and the Chief Justice of India, he also discussed a lot about uh, the debate regarding the societal morality on one side and constitutional morality on another side. Because this was the case where the view of the society or social morality was against the women. The women was not being allowed to go inside the temple. So that these are the social norms, and of course, whether we have to go by the societal norms or societal morality, which is on one side, or shall we proceed further to the constitutional morality? That is a very important thing which we have to keep in mind. And to end up the things, I would definitely like to quote Justice Chandrakyu, who said that constitutional morality is supreme. Whatever the social norms are there, whatever the social morality is there, it has no value as far as the constitutional morality is there. Thank you so much. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. Now, let's move to the next question. अब हम बात करते हैं हमारी जुडिशरी न्यायपालिका और संवैधानिक नैतिकता की। मैं आरती शर्मा मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैम कृपया हमें बताएं कि संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने में हमारी न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है। Thank you, ma'am. Thank you to the organizers and the associated team. So, coming to the discussion of constitutional morality and the contribution of judiciary. First, we have to understand what is constitution and what is constitutionalism. Then we'll have to understand that why the concept of constitutional morality has emerged. You know, like one of sudden it is there in the discussion. But the judiciary has played very important roles since 1951. So जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हिटलर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, आपके जितने भी यूएसएसआर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, इस्लामिक कंट्रीज है उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बट जब सॉवरेनिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस था अमेंडमेंट्स, जब अमेंडमेंट अगर इस तरीके से होता है कि तो सॉवरेनिटी लाइज विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उसको अमेंड करके अगर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ अमेंड करके अपने फेवर में काम कर सकती है। सो अगर हम लोग यूनिवर्सलिज्म में नहीं जाके, प्लूरिस्टिक अप्रोच में नहीं जाके, एक पर्टिकुलर मेजॉरिटेरियन अप्रोच में जाते हैं, so definitely there is violation of right of the minority. So minority not in the religious sense, minority may be in any sense. So अगर women हैं, जहाँ पे women की संख्या कम है, so that can be part of minority. So minority can be a religious, linguistic or sexual or किसी भी sense में आपकी minority हो सकती है। So first they have developed the concept of constitutionalism. So this is not developed, the concept of constitutionalism, it was there in the constitution. आप देखेंगे कुछ fundamental rules है, जैसे separation of power. What is it? There is distribution of power, जो government को check करता है ना, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। If you see schedule 7 of the constitution, जिसमें बाइफर्केशन किया गया है कि स्टेट क्या कर सकेगा, सेंटर क्या कर सकेगा, एंड कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सेंटर और स्टेट लॉ बना सकता है। एंड देन देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। सो व्हाट इट सेज दैट इफ यू सी द 24th अमेंडमेंट, जो कि हम लोगों ने बहुत केस पर भारतीय केस हम लोग डिस्कस करते हैं, आर्टिकल 368 उससे पहले गोलकनाथ आया था, संजय प्रसाद, सज्जन सिंह केसेस में पूरा जो डिस्कस हो रहा था अमेंडिंग पावर ऑफ द जुडिशरी, कि जुडिशरी क्या अमेंड कर सकती है क्या नहीं कर सकती, वेदर इट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स और वेदर इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन टोटलिटी और नॉट। सो फर्स्ट इन द केस ऑफ
केशवानंद भारती. जब if you read Article 368 after 24th Amendment, in literal sense, it says Parliament has power to amend the laws or amend the constitution. If you read the title and the established clause, but then judiciary, there is check and balance, and judiciary ने कहा कि नहीं, the Parliament has power to amend the constitution subject to basic structure of the constitution. Like parliament cannot amend the basic structure of the constitution. So basic structure की जब बात करते हैं तो उसको jurisprudence से associate करता है inner morality. जैसे अभी सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, that there is public morality, societal morality, and then there is constitutional morality. So what it says, the societal or political opinion की बात आती है, it varies from the society to society and time and again. But constitutional morality इतनी deeply rooted है in the constitution, like the concept of equality, the concept of liberty, your dignified life, and then all the principles, your freedom, justice, social, economic, and political. So because the principles are so inherited, deeply rooted in the constitution, in the preamble of the constitution, in part 3, 4, and other associated clauses. So now it is the duty of the judiciary to apply these principles, to uphold the values of the constitution. So first, in the case of Keswan and Bhati, when they decided that basic structure of the constitution cannot be amended, it is also part of constitutional morality. And what is basic structure? जो आपके संविधान के ऐसे तत्व है कि जिनको हटा दिया जाएगा तो संविधान की आत्मा नहीं बचेगी. So that is the soul and spirit of the constitution. Even clearly it is not mentioned in the judgment in a detailed manner that these are part of the constitutional morality. But basic structure का जो doctrine है जो हमें कहता है individual liberties has to be protected, the rights has to be protected. That is also part of constitutional morality. Then एक era आता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में पब्लिक मोरालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ऊपर रखा. जैसे उन्होंने कहा there was the discussions when they said complete prohibition of liquor. It is violation of Article 19, but उन्होंने uphold किया the public morality because जो public opinion को लगता है large chunk of the society जो सोचती है that this is right and wrong. Because what is morality? Morality is your decision. If something is right, it is moral. If something is wrong, it is immoral. So एक particular time तक judiciary ने जैसे gambling, उन्होंने कहा gambling is illegal. But gambling का कौन सा part है? Whether it is completely prohibited or partially it is prohibited. So एक particular era में whatever was decided by the judiciary, they kept in mind the public morality. अभी by this all this concept constitutional morality is a discussion because अभी हम लोग constitutional जो values है उनको promote कर रहे हैं. जैसे सर ने भी बताया सबरीमाला decision, जैसे Mars Foundation decision. We are protecting the rights of LGBTQ. We are saying that they are the citizen of India. They are like us, but having different characteristics. So their rights has to be protected. Same case में जैसे मनोज नारुला वाला केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की ओपिनियन है public morality is that if the person having criminal background or any criminal charges against him, he should not contest the election. But if you read the constitution, वहाँ पे इस तरीके के कोई भी barriers उन्होंने नहीं डाले गए. ऐसे ही हम लोग जब देखते हैं कि prostitution rights की जब बात करते हैं, sex workers की जब बात करते हैं, large chunk of the society अगर आप public morality पे जाते हैं तो ये should be completely prohibited. They do not have any rights. उनकी कोई dignified life नहीं होनी चाहिए because morality, public morality को लगता है कि it is wrong. But when the matter was decided by the Supreme Court, उन्होंने कहा the sex workers they have right to have a dignified life. तो इन सब मुद्दों को जैसे women से related आपके जितने भी issues हैं, उन सब जैसे untouchability हम लोग आज से 70 years पहले untouchability क्या है? वहाँ पे बहुत अच्छे से it was a custom
prevailing in Indian society. तो अगर mythology में नहीं था, normally discussion is not a point of any like controversy. I'm just giving you the example for the purpose of understanding. तो उस टाइम पे लोगों को लगता था there is no problem in untouchability. But अगर आप देखेंगे हमारा constitution है prohibit करता है untouchability को. अब इस सेंस में आज के टाइम पे अगर कोई प्रिंसिपल्स को अप्लाई सो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कहती है that individual have liberty, dignified life, their equal autonomy, right to privacy. All these are part of constitutional morality. अभी ये डिस्कशन में इसलिए है कि रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़ जी है, जस्टिस दीपक मिश्रा जी के टाइम से जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है that it is the duty of all wings of the एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो आपके पार्लियामेंट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए दैट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कहते आ रहे थे कि बेसिक डॉक्ट्रिन इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड नॉट बी अमेंडेड. अभी उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी दैट इज द inner morality, that is the basic values of the constitution. If you read the preamble of the constitution, you will understand it is clearly mentioned that what is constitutional morality. There is no definition, but clearly you can understand the basic values, basic norms of the constitution are called constitutional morality. We go through the recent decisions of the Supreme Court. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your. मैं थोड़ी मैम की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रही हूँ. तो जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो बेसिकली शुरू में जो जुडिशरी थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लिया था. मैम की बात को मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ. काउंटर पॉइंट्स ऑफ पब्लिक मोरालिटी लिया जहाँ पे उसने ये कहा कि जैसे कि मैम ने बताया था लिकर की बात बताई थी कि लिकर पब्लिक मॉरलिटी के हिसाब से तो बैन हो जाना चाहिए था, लेकिन डिसीजन में ऐसा नहीं आया. उन्होंने कहा कि ये लिकर का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करेगा. तो शुरुआत में जो जुडिशरी ने जो डिसीजंस दिए वह काउंटर बेस ऑफ पब्लिक मॉरलिटी था. और बाद में जो 2000 मतलब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को देखेंगे तो 2010 तक केवल 10 केसेस थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वर्ड को यूज किया जुडिशरी ने. लेकिन 2018 और 19 ऐसे थे जो उन पर्टिकुलर इयर्स में ही उन्होंने 10 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को कहा. तो जैसा आरती मैम ने कहा कि जस्टिस दीपक मिश्रा सर थे और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने इस वर्ड को ज्यादा डिफाइन किया और उनकी डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आ रहा है essence or the spirit of the constitution. तो थोड़ा सा हमारा जो जुडिशरी है वो मूव कर रहा है. और जैसे अभी सुनील सर ने बताया कि सबरीमाला का केस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को काफी हाईलाइट किया गया है. तो जहाँ आपको उसमें ये भी बताओ कि मेजॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे यूज किया, जिसमें जस्ट ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे. लेकिन आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि सबरीमाला केस में माइनॉरिटी व्यू था जस्टिस इंदु मल्होत्रा. जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम का था ऑनरेबल जस्टिस, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज किया. सभी जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज किया, लेकिन अलग-अलग इंटरप्रिटेशन के साथ में. दीपक मिश्रा सर ने और चंद्रचूड़ सर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज किया एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा पब्लिक मोरालिटी से बड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जैसे कि सुनील सर ने बोला. लेकिन इंदु मैम ने जो बोला उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो नो डाउट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पब्लिक मोरालिटी, लेकिन उसको हार्मोनी क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो हमारे रिलीजन के साथ में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में और हमारी जो राइट्स है उनके साथ में इन सब चीजों को देखते हुए हार्मोनी क्रिएट करे, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है. तो अभी ये चर्चा का विषय चल रहा है, हमारे जजेस इन पे अलग-अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं. देखिए आगे इसको किस तरह से और हम एस्टैब्लिश कर पाते हैं. नो डाउट
constitutional morality is more than the public morality or the societal morality. Thank you. I agree somewhat, but I agree to disagree. It's not that all, there is always conflict between the societal morality and constitutional morality. They work hand in hand sometimes, but when there is conflict in the societal morality and constitutional morality, then the judicial approach should be that constitutional morality should prevail over सोसाइटल मॉरलिटी और पब्लिक ओपिनियन. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो हमारी सोच है, जो सोसाइटी की सोच है, वो इनकंसिस्टेंट होगी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी. मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेम होते हैं, वो साथ में दे वर्क इन हार्मनी. ऐसा नहीं है कि हमेशा सोसाइटी चाहती है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाए. ऐसा नहीं है कि हम progressive, the society is not progressive कि we do not respect individual autonomy, we do not respect right to privacy. We do, but the judiciary की approach है when there is conflict between two fundamental rights. One says right to religion and the other is Article 21. तो वहाँ पे जैसे सबरीमाला का जो जजमेंट था, वहाँ पे religious denominations की बात आ रही थी और rights of women की बात आ रही थी. 10 से 50 years तक की women थी, उनको prohibit किया गया था from entering into the temple. तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस established norms और customs, तो उनकी जब बात आती है, तो अभी जो एरा चल रहा है वहां पे हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में we are not promoting individual rights. It's not that we are promoting individual rights, but we are promoting the norms of the constitution. We are promoting the constitutional morality. आर्टिकल 21 पे हम फोकस कर रहे हैं, आर्टिकल 14 पे हम फोकस कर रहे हैं, आर्टिकल 19 पे हम फोकस कर रहे हैं. तो जहाँ पे कंफ्लिक्ट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी प्रिवेल करती है, और ये कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ये कंफ्लिक्ट लिमिटेड है. एंड अगर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होते हैं सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारी सोसाइटी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करती. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अगर हम लोग देखते हैं या फिर जुडिशरी के अनाउंसमेंट को हम देखते हैं, तो लिमिटेड राइट्स हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करें, डूली रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ, जैसे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, 377 को हमने स्ट्रक डाउन किया. अडल्ट्री की जो प्रोविजंस थे कि पुरानी कस्टम के हिसाब से विमेन आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन, बहुत पेट्रियार्कल सोच थी, तो उसमें था कि मेल Sorry to interrupt you, but थोड़ा समय की पाबंदी Thank you so much. conclude the discussion. You have no issues. Thank you so much, ma'am, for sharing your great knowledge with us. Now it's time to conclude the session. It was very valuable and fruitful session for all the audience. Thanks to our panel members who gave their valuable time from their busy schedule and all the audience to be part of our session. Now I would like to request to invite Dr. Gaurav Kataria, sir, Principal, Assistant, Subodh College, to present the moment to our esteemed guests. And also to Sunil Narnaulia, sir. And Mahesh sir. हेलो, मैं अनुरोध करती हूँ कि भारती जाहिर मैम को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए.
would now welcome the Minister of Agriculture.